The all-important Super 8 clash, even more so for Australia. Now, 205 is what India have managed. 206 is the mission that the Aussie boys would be on. I'm Suhas Vedam, joined by Mr. Vijay Daya, and you are watching The Narrative, a T20 World Cup special brought to you by the Times of India. And this is the mid-match show interlude. Welcome, Vijay sir. Thank you so much. Mighty pleased with what's on the board? You can say that, but on the other end, the kind of start that you had around about 12th over, you were 127 for just 2 down. If you look at that, you were looking at least 220, 225. I'll say pass score here is around 200, especially looking at this kind of surface. They'll be touch disappointed. Normally, you don't say that after scoring 205, but I think Indian team were looking good for 220 on the board. But what a special inning by a special player. Yeah, Rohit Sharma. And the intent, you lost Virat Kohli early on, but didn't change anything. And I think this is what he's been saying all along by his actions, Rohit, that this is the way this sport needs to be played, this format needs to be played. He's done that same in the 50-over cricket as well, continuing with the same sort of an intent. And it looked like he was playing on a different sort of a surface and everybody else was playing on a different surface. There was a little rain halt as well. It didn't matter to Rohit Sharma. Not to him. I think when you have that kind of intent, everything is so positive about him. He was going after the bowlers, and I think he was playing with them. He knew all along, as if he knew all along where's going to be the next ball coming, and he was all set, all ready. I think one of the best innings that I've seen in a long time, especially against an Aussie side. Especially against an Aussie side, says Vijay sir. But I'll tell you what. So Vijay sir, all of us were at the edge of our seats, and not just that. There are a couple of people who are on their toes. One is the bowler, of course. The other is a statistician, because a lot of records were tumbling. Rohit was 50 when India was 52. So 19 ball 50 for Rohit's 50s all put together. Rohit's 50 fastest T20I 50 is this one that you just witnessed today. 200 plus sixes for Rohit, the most by anybody in T20Is. 8 sixes for Rohit in this game is the most by an Indian in this World Cup. Records are tumbling. Records, but just to add on one more performance, 4 overs, 14 runs by Hazelwood, where your team is gone for 205. Yeah, and an important wicket as well. And so we're talking about 16 overs going for 190. Suhas, this is what has happened to Australia. But you talk about Rohit, you talk about his intent, you talk about his range. I mean, like the way he was hitting, the way he was going crazy. Those numbers justify the way he's played today. प्री-मैच शो में हमने बात की थी जैम्पा का खतरा, यहाँ पे जैम्पा को खतरा ज्यादा दिखाई दिया. आई थिंक जिस तरीके से शुरुआत करी ना, वो जैम्पा या तो इस तरफ है या उस तरफ है. और सिर्फ जैम्पा ही नहीं, लेग स्पिनर्स ऑन देयर गिवन डे वो मैच कहीं से भी जिता सकते हैं, और अगर आप उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो फिर वो असर आपको नजर आएगा. हम प्री शो में एक और बात कर रहे थे ना, एक जेंटलमैन जिसका आपने नाम लिया था, मैक्सवेल, वो तो नहीं आती कैसे, इतने लेफ्ट हैंडर्स थे इसीलिए पूछ लिया. नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बिल्कुल वाजिब सवाल था वो आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है. पर जब इस तरीके से पिटाई हो रही हो ना टीम की, तो आपको वो एक विंडो नहीं मिलती कि कहां पे आप ये सोचे कि मैं इनसे एक ओवर करा लूं. वो एक रिस्क आप उठा सकते थे. लेकिन अगर इस तरीके की बैटिंग पंत कर रहे होते, दुबे कर रहे होते, जडेजा कर रहे होते, तो शायद एक ओवर आपको मैक्सवेल का मिल जाता. लेकिन रोहित कर रहे थे, राइट हैंडर थे, इस वजह से आपने वो हिम्मत नहीं करी कि मैक्सवेल को वो ओवर कराए, क्योंकि जितने महंगे स्टॉक साबित हुए हैं उससे ज्यादा थोड़ी हो जाते वो. लेकिन वो विंडो ही नहीं क्रिएट हो पाई जहां पर आप पार्ट टाइमर को वो एक ओवर करा पाते. पार्ट टाइमर नहीं हूं ये कहने की कोशिश कर रहे थे मैक्सवेल ऐसे प्रदर्शनों के साथ. वापस आप पार्ट टाइमर टैग पे आ गए, क्योंकि फिलहाल उनकी शायद गलती नहीं थी, आज गेंदबाजी उन्होंने की नहीं, लेकिन मौका नहीं बन सकता था जैसे आपने कहा, क्योंकि रफ्तार कुछ ऐसी पकड़ ली थी. और सूर्य कुमार यादव फिर से एक बेहतरीन स्टार्ट, 31 of 16, वेरी सूर्य कुमार लाइक इनिंग्स, बट वेरी अनलाइक सूर्य कुमार टू गेट आउट इन दैट फैशन. आई थिंक जब स्ट्रोक प्लेयर आउट होता है ना, तो हमेशा आपको बहुत ऑर्डिनरी लगता है, और इस लिस्ट में आप बहुत सारे नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो आउट होते हैं तो आपको लगता है कि क्या जरूरत थी शॉट मारने के लिए, लेकिन उनके रन भी इसी तरीके से बनते हैं. फिर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, पिछले मैच से इस मैच के अंदर जब अच्छी टीमों के बारे में आप बात करते हैं तो निरंतरता के बारे में बात करते हैं. और यहाँ पर निरंतरता में परफॉर्मेंस की नहीं कर रहा हूं, मैं निरंतरता यहाँ पर एफर्ट की कर रहा हूं, मैं निरंतरता यहाँ पर इंटेंट की कर रहा हूं. पिछले मैच में भी आप देखिए छोटी छोटी पारियां खेली, और एक बड़ी पारी कहीं ना कहीं मिल जाएगी. जैसे पिछले मैच में 50 मिल गया था आपको. जी हाँ, सूर्य कुमार की, हार्दिक का 50 मिला, हार्दिक का जी. और इस मैच में आप देखें कि शुरू में रोहित की जो इनिंग मिली है वो तो लाजवाब है ही. अगर वैसी इनिंग नहीं भी मिलेगी तो भी आप हमेशा
इस इंटेंट के साथ खेलेंगे कि कम गेंदों में आप 30-35 जोड़ते रहेंगे तो वो 170-180 के आसपास आप हमेशा मंडराते रहेंगे। और वही है समरी पे भी जो आप कह रहे थे, रोहित गुरनाथ शर्मा 92 इंक्रेडिबल इनिंग्स अप टॉप, बिल्कुल एक मोमेंटम दे दी थी उन्होंने, लय पकड़ ली थी। फिर सूर्य कुमार यादव 31, हार्दिक पांड्या चिपिंग इन अगेन 27 एंड रेडिंग फॉर हिम एज वेल टुडे, दुबे 28। अगेन अपने रोल्स को बखूबी समझते हैं और वो जो भूमिका है ना वो निभाते रहेंगे, क्योंकि इस मैच के बाद आपको शायद ही कोई चेंज देखने को मिलेगा इंडियन टीम में। टेम्पलेट सेट है। हाँ बिल्कुल सेट है, वो इंटेंट वाला सेट है। अगर आपको चेंज देखने को मिलेगा भी ना तो भी खेलने का तरीका यही मिलेगा, क्योंकि आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि भाई इस टीम ने अब ऐसे क्रिकेट खेलनी है, इस तरीके से आप खेलेंगे। आप अपना नंबर ढूंढ लीजिए, जिस भी नंबर पे आप बैटिंग करने आएंगे खेलना इसी तरीके से, तो वो आप सेट करते चलते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया ने 90s में 2000 के अंदर वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया तो नाम कई बार चेंज हो जाते थे, लेकिन खेलने का तरीका वही रहता था। और वही कोशिश इस T20 फॉर्मेट में ये इंडियन टीम या कोई भी अच्छी टीम करने की कोशिश करेगी कि इंटेंट वो रहेगी, चाहे नाम चेंज होते रहे। आप कोई भी खिलाड़ी आएगा इसी तरीके से खेलना है। पहले 6 ओवर में आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, तो वो एक लेगेसी या एक बेंचमार्क आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर पीपल टू फॉलो। वजह से भले ये ऑस्ट्रेलिया हो जो अभी थोड़ी सी जख्मी हो अफगानिस्तान के मैच के बाद, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, इनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बड़े मैच जीतना जानते हैं। 206 को हेड ऑफ ऑनर कैसे अप्रोच करेंगे? एक ही तरीका है, जब 200 से ज्यादा रन आपने बनाने हैं ना, तो चाहे आप 2 विकेटें खो दें, आपकी कोशिश ये रहेगी कि पहले 6 ओवर के अंदर बहुत एक्सप्लोसिव स्टार्ट आपको चाहिए, वो बहुत मजेदार होने वाला है। ट्रेविस हेड की तरफ बात करें ना, ऑल और नथिंग की बैटिंग होती है उनकी, या तो आपको 10 के अंदर आउट होते हुए नजर आते हैं, नहीं तो फिर वो 60-70-80 का पहाड़ा पड़ते हुए नजर आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेविड वार्नर की जो इंटेंट पिछले कुछ समय में रही है ना, वो उस तरीके की नहीं रही है। ऐसे लगता है कि 2 भागों में वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं, थोड़ा समय लेना चाहते हैं, फिर रन बनाना चाहते हैं। वो डेविड वार्नर कभी नहीं थे। डेविड वार्नर तो एक भय अपोजिशन में पैदा कर देते थे, वो उनकी खेलने का तरीका था। तो शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और एक ही तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में देख लेंगे, बाद में बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर हो जाएगा। आपको शुरू के जो 6 ओवर हैं उसमें कोशिश करनी पड़ेगी कि कितने ज्यादा से ज्यादा रन आप बनाने की कोशिश करें और वापस दबाव गेंदबाजों के ऊपर डालें, जो भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ किया। Still a very good wicket to bat on. अब इन परिस्थितियों में where do you see Kuldeep ball? Which length? Because Kuldeep is someone who said even during the IPL that I change my lengths not just according to the pitch but the opposition as well. You got your answer. And that's what he's going to do. And add one more thing to it: situation. Okay. And in a situation like this, what Kuldeep needs to do is just play normal cricket. Sometimes it's easy to say, but very difficult to do it. Right. Australian batsmen will be running after him. It's not the other way around that he's going to be running after him. It's not 140, 150 where you have to go for the wickets. It's more than 10 runs and over. So you will be trying to do that. You coming after me, I'll try and bowl few dot balls. I'm going to try that. And when you try and go after Kuldeep, that's where he becomes even more dangerous. So I think Kuldeep's going to be very important, like you mentioned. Bumrah is always somebody who's there. Somebody will be under pressure. Okay. Somebody will be attacked. Is it Arshdeep? Yeah, definitely to start with, because in first 6 overs they'll be little wary as far as Bumrah threat is concerned. They'll try and go heavy or try and go aggressive against Arshdeep for sure, because they think that he can be a weak link at least in first 6 overs. So that'll be their thinking. But they have to score from both ends. All right. Thank you so much, Vijay sir, for all your thoughts. Cheers. So the Indian bowlers have their task cut out. Their cushion is 205 because that's what their batters have put on board. Target 206 for Australia. Enjoy the game and we'll be back at the post-match show.